Jai Gurudev, everybody, and welcome everybody on the Zoom call, on YouTube, watching us live. So, on behalf of our Wisdom and Satsang team, it gives me great joy to welcome Vaishali Didi. मुझे बहुत खुशी हो रही है वैशाली दीदी को वेलकम करते हुए. वैशाली दीदी is one of the first few holistic cooking teachers. She is a dietitian. She has been teaching the holistic way of cooking across India, Thailand, Russia. She has trained teachers for the same, and she's also headed 1,000 teachers in Mumbai as part of the state teachers coordinator of Maharashtra. And Didi has also been handling Maharashtra and Goa Art of Living corporate programs. तो फूड से लेके ऑफिस से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके दीदी को सब चीजों का एक्सपीरियंस है. एंड वी आर सो डिलाइटेड टू हैव वैशाली दीदी. वेलकम दीदी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी. Thank you, Jyoti. Thank you. So Didi, shall we start? You want to say a couple of things, Sure. or should I start with the questions? What do you think? No, you start with the questions. Okay. So Didi, summer has started. So गर्मी की season में what do you think Didi should be the ideal way of our food intake? Should it be less? Should it be no less, more? कैसा होना चाहिए दीदी? What should be the good practices to be followed? Can you hear me? Yes, Didi, we can hear you now. Can you hear me, हाँ, Didi? तो इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें? Everybody Anything is okay, English. right? Yeah. चलो मिक्स में बात करते हैं. So गर्मी है ना, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है कि दिस इज द टाइम को. तो क्लीनिंग के लिए क्या लगता है? पानी लगता है ना, साबुन लगता है, स्क्रबर लगता है. Sorry, I think my network is a little low. That's why there is a challenge. Is this better now? Yeah, is this better? Yes, no? Yeah, okay. So the point is to remember that this is the cleaning time of the body and nature supports us in the same way. So अगर आप देखोगे तो पानी वाले फल ज्यादा मिलते हैं. So you have grapes, you have muskmelon, watermelon, all of this coming in, right? तो इन चीजों को ज्यादा खाना है. भूख बहुत नहीं लगती है तो लाइट खाना रखना है. इस सीजन में बहुत सारा छाछ पी सकते हैं हम, है ना. और फेवरेट चीज अगर आपकी है तो नारियल पानी और शुगर केन जूस. या सो दीज आर थिंग्स यू कुड focus on. Tad gole. These are the things you could focus on with summer. And Didi, summer and mangoes are inseparable for many of us. Absolutely. In Mumbai. No, mangoes are to be eaten. So summer है तो mango. Many people have fear of eating mangoes, diabetes or fat or pitta high and all that. So Didi, what is your take on mangoes? ओके, सबसे पहले तो मैंगो खाने का एक तरीका है जो ट्रेडिशनली हम फॉलो करते आए हैं कि मैंगो को हमेशा पानी में डाल के रखते हैं थोड़े 1-2 घंटों के लिए, उसके बाद खाते हैं. अगर आमरस खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध डलता है या किसी किसी कम्युनिटी में थोड़ा सा घी डलता है. तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड है खाने का, उस हिसाब से अगर हम आम खाते हैं भिगोने के बाद तो फिर तकलीफ नहीं देगा. और अभी आम का सीजन आया नहीं है. हाँ, कहते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम व्हिच इज आफ्टर मिड अप्रैल या टुवर्ड्स एंड ऑफ अप्रैल जब हम आम खा सकते हैं. हाँ, मुंबई में रहते हैं तो आम तो जनवरी से मिलता है और बस गर्मी शुरू होते ही सब खाना शुरू करते हैं, लेकिन आम खाने के लिए अभी टाइम है. सो खा सकते हैं. जो डायबिटिक है, एक्चुअली देखिए कैसा है, वो लोग भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन जो एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें वो फ्रूट मना करेंगे. लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग यू शुड
should avoid. But unless you have had a proper counseling session and understood why it is okay and how you need to eat the fruit and when do you need to combine it, then I think once that fear goes away, then you're free to eat that mango. और वजन बढ़ने की बात आई तो फ्रूट से वजन बढ़ता नहीं है, किसी भी फ्रूट से नहीं बढ़ता। ये थॉट तब नहीं आता है जब हम समोसा खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, और क्या फेवरेट जो भी चीजें हैं वो खाते हैं, तब वजन की याद नहीं आती है। आम खाने के टाइम पे वजन की याद आ जाती है। So most important thing to remember, Jyoti, is that we have to eat fruit on an empty stomach. खाली पेट खाना है। और खाली पेट कब होता है? जब हम सुबह उठते हैं तब पेट खाली है। सो आपका ब्रेकफास्ट आम हो सकता है, आम का रस हो सकता है, या फिर 4 बजे खाना खाने के 2.5 घंटे बाद। अगर आपने एक वेजिटेरियन मील लिया है तो 2.5 घंटे बाद। अगर आपका लंच नॉन वेजिटेरियन मील रहा हो तो करीबन 4 घंटे बाद आप फ्रूट खा सकते हैं। तो आपका इवनिंग मील फ्रूट हो सकता है। तो इवनिंग मील मतलब स्नैक मील जो है, आपका आम है, अंगूर है, केला है, चीकू है, सब कुछ खा सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वो खाने के बाद अच्छा खासा खाने के बाद आप देखो आपको कितनी भूख है और उस हिसाब से फिर आप डिनर खाओ। आपका डिनर छोटा हो गया तो भी चलेगा, आपको पेट फुल है, एनर्जी ठीक लग रहा है, यू आर ओके। सो ना किसी फल से वजन बढ़ता है, ना किसी फल से शुगर बढ़ता है, और कोई भी फ्रूट खराब नहीं है। अगर आपको किसी फल खाने से जुकाम हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको याद रखना है कि फ्रूट का काम साफ सफाई है, और जब साफ सफाई होगी तो जो रास्ते हैं खुले हुए, उन रास्तों से ही कचरा बाहर आएगा। तो जुकाम होना, खांसी आना, ये गलत बातें नहीं है, ये कचरा फेंकने के मार्ग है। आप घर में दिवाली की साफ सफाई करते हैं तब नाराज होते हो क्या? थोड़ा सा कचरा आपको लग गया या कपड़े धूल से भर गए तो नहीं, आप नाराज नहीं होते हो। आप क्या सोचते हो? अरे पर मेरा घर तो चमकने वाला है, राइट? तो वैसे ही फ्रूट खा के अगर कोल्ड कॉफ हुआ थोड़ा सा, तो याद रखो सोना चांदी नहीं जा रहा है बॉडी के बाहर, कचरा जा रहा है बॉडी के बाहर, जाने दो, है ना? So yes, दीदी yeah. इससे कनेक्टेड मुझे याद आ रहा था, आई यूज्ड टू गेट कोल्ड आफ्टर ईटिंग बनाना एंड यू हैड गिवन मी अ वेरी नाइस टिप टू हैव banana and not get cold. Can we share that with everybody, please? You want to share that? Which having tip it I with, gave you? yeah. It was having it with pepper. So I still Yes. remember, and it has helped me a lot. Didi, on this same subject of fruits, many people think it is a good idea to mix all the fruits and eat together. कि सारे फल, आम, केला, सब फ्रूट सैलेड बना के हमें खाना चाहिए. So is it a good idea, दीदी? And there are also advocates कि एक टाइम पे एक फ्रूट खाना चाहिए. So what do you recommend? So अगर if you're taking that first step कि भाई आज मैंने ये टॉक सुना और इसलिए अब मैं फ्रूट्स खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट और 4 o'clock में, तो इनिशियली मे बी आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 फ्रूट की वैरायटी हो तो फ्रूट खा पाएंगे, पर जैसे जैसे आप उसमें सेटल हो जाओगे तो डेफिनेटली eating one fruit at one time is easy for the body. So आप केला खाओ या मस्क मेलन खाओ या आधा वाटरमेलन खाओ, जो भी है, आप one fruit at a time is a good thing. Sweet fruits together, citrus fruits together. So don't mix everything together. Yeah, that's a ideal way. So आपने 2 केले खाए, 3 केले खाए, आधे पौने घंटे बाद आपको लगा या 1 घंटे बाद आपको लगा कि मुझे भूख लगी है, you can eat a big bowl of watermelon, whatever you like. It's okay. So ऐसा नहीं है कि एक फ्रूट खाया तो उसके बाद कुछ नहीं खा सकते, ऐसा नहीं. And Didi, what about mixing fruit and vegetables together, making a green smoothie and colorful smoothie and having it? Is it a good idea? Not at all. So अगर आपको वेजिटेबल स्मूदी लेनी है तो उसको सेपरेट रखो, फ्रूट की स्मूदी लेनी है तो वो सेपरेट रखो. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिक्स नहीं करेंगे हम. there are only 2 fruits that you can put even in that in a salad, not as in a smoothie, and that is your pineapple and pomegranate. ये 2 ही फल आपके सैलड में जा सकते हैं, थोड़ा सा टैंग, थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए, क्योंकि इसका डाइजेशन जो है वो कुक फूड के करीब है.
तो इसीलिए ये दो मिक्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जा सकता सैलेड में। फिर बाकी सब चलेगा, आपका आलू है, उबला हुआ बीट है, कॉर्न है, सब्जियां हैं, चटनियां हैं, वो सब डालो आप सैलेड में और वो करो, वो सैलेड करो या वेजिटेबल स्मूदी बनाओ, जैसे भी, कोई बात नहीं। Many times when we have raw food like smoothie, तो गैस हो जाता है लोगों को, उसके लिए मतलब the taste is not so palatable. So what can we do to make it more easy to drink? ओके, सबसे पहले आप क्यों पी रहे हैं वो सोचो। इफ यू लुकिंग एट हेल्थ, या so there are two different schools here. There is a school of nutrition and there is a school of Ayurveda. In the school of Ayurveda, raw vegetable juice is something that will not be recommended because according to Ayurveda, gas is made बन जाता है कच्चा खाने से। लेकिन school of nutrition will not say no to a vegetable juice. It will say yes, that's the way you can increase your raw intake. So if you had to take it, it is before lunch or before dinner. You have to make it as tasty as you can by combination of vegetables. So if you took white pumpkin, you took some celery, अभी raw mango का season है, so खटाई के लिए raw mango डाला और एक smooth juice बनाया. You don't have to eat a chutney. You don't have to have it very thick. हाँ, खाना नहीं है, पर उसको tasty बनाना है. Of course, tasty मतलब उसमें salt नहीं जाता है, पर आपको जिंजर डालना है या सेलरी डालना है या मिंट डालना है। हाँ, जैसे टमेटो, बीटरूट एंड जिंजर विथ लॉट ऑफ लाइम, अभी आंवला। सो this also is tasty. You have to know how to get the taste right. That's about it. And why are you drinking it? Is it because you want to increase the raw intake? These are full of life according to the science of nutrition, and they give nourishment to the body. They are bodybuilders. So that's why they asked you to drink a vegetable juice. Ayurveda will not say that to drink it. On certain specific recommendations, they may have certain combinations for certain things in Ayurveda. But all the way, it may not talk about a vegetable juice. ये अब सबका फेवरेट टॉपिक, वेट लॉस। So Didi, how is weight and food? Many people, instead of thinking food as nourishing, are afraid of food these days. So Didi, what is your advice for people who are looking to lose weight and are scared of eating? So I would go back to what, so I don't know if everyone here is from the art of living. If you're not also, I would just refer to one thing that I've heard Gurudev Shri Ravi Shankar ji say, that when it comes to the body, effort is what is required. When it comes to the mind, it is effortlessness that is required. And what we do is exactly opposite. We put all the effort on the mind and we have and no effort on the body. And that's where weight begins. Yes. So many a times, if you see people who have a weight issue, it is not related to their eating pattern. It is related to the mind. Yeah. So what we need to do is to take care of our mind. Yeah. Through pranayam, through meditation, through Sudarshan Kriya, through going for an advanced course every 6 months and giving that break to the mind. The moment that happens, yeah, and you align to eating according to natural law, which is what nature offers us, you definitely will lose weight. Yeah, you need to exercise. You can't say, I will not exercise. Whatever you can do. You can do walk, you can do Surya Namaskar, you can go to the gym, you can swim, you can do Padmasana, but something has to be a part of your daily living. You can't say that I will not do anything and just through diet and just through pills it should happen. No. Yeah, it's running away. It's taking. Actually, सेहत की जिम्मेदारी हमारी है. कोई और नहीं कर सकता हमको सेहतमंद. और एक गोली खा के कोई सेहतमंद नहीं हुआ. कोई भी गोली खा के. So उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा. शरीर है, कष्ट करो, अपने आप को काम वो देगा रिजल्ट. लेकिन हमारे पास पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि एक रात में हम सब ना 2 मिनट मैगी नूडल जी रहे हैं और सोच रहे हैं
कि भाई ये 2 मिनट में आपको पहला रिजल्ट देगा, और वो वेट लॉस क्विक फिक्स नहीं है कि इससे, देयर इज नो क्विक फिक्स. कैन यू हियर मी नाउ? ऑडिबल? Yeah. So there is no quick fix to weight loss or weight gain. Effort is the thing of the body. Yeah. Nowadays, fasting is become a fad. Intermittent fasting, keto diet. So, Didi, what kind of fasting do you recommend? कैसे करना चाहिए? What should be our diet during the fasting time also? Okay. So there are two natural fastings to the body. Yeah. One fasting that, again, I would go back to what I've heard from Gurudev, is to fast on Ekadashi. Yeah, which is 4 days prior to full moon or a new moon. Why? Because the moon and the mind are connected. So by fasting, we help to get that mind in control. When you're fasting, what it means is to eat simple food. Yeah, and according to nutritious, and the natural another way fast is when we have fever. Yeah, when we have I think Didi is not audible. She is rejoined. आप लोगों के पास कुछ questions है that you want to know? Just send the questions to me. Okay, you can type in the chat box. Chat box is open, and you can send in your questions to me. Okay, we'll just wait for Didi to get her network back, and she's just rejoining. Okay, so in the meantime, you can send your questions. Can to you me. hear me? Yes, Didi, yeah, you're back. Okay, sorry about that. Internet down, technology challenges. Okay, so where were we? Sorry, I missed. What was the question? We couldn't hear about the fasting part properly. Ekadashi we heard. Ekadashi में fasting करना चाहिए. Okay, so दूसरा है कि जब हमको बुखार आता है और हमारे मुंह की टेस्ट चली जाती है और हम कुछ खाने का मन नहीं करते हैं, तो क्या है, बॉडी नेचुरल वे से बता रहा है कि कुछ खाओ मत, यानी क्या हुआ, फास्ट हुआ. वो 3-4 दिन में बुखार उतर जाता है और फिर टेस्ट आती है और फिर खाने का मन करता है. सो दैट्स अ नेचुरल वे टू फास्ट. और अदर मेथड्स के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं है, तो जो बात की नहीं है उसके बारे में बात करना सही नहीं होगा. जो किया है उसकी बात कर सकती हूँ. ठीक है, ग्रेट. Didi, Ajita is asking, can you have spinach, boiled spinach with curd, that is palak raita, pineapple raita? So what food combinations are good and what are not good? So all combinations like that are okay, but like things like fish and milk is not supposed to be eaten together. Yeah, so that is something I don't think in this group anyone is eating meats in that sense. Yeah, so things like that we should avoid. We should also avoid all kind of fruit shakes like a banana shake and a mango milkshake and a chiku milkshake. So milk and fruit as a combination together is a bad one. It creates a toxin. See, there is a mineral present and milk together. This creates a toxin, and that toxin increases the speed of blood circulation within the body, which is harmful to the body. So when I said earlier that in your amras you have to put milk, it is a very small quantity. Yeah, it's not a milkshake. So that is okay, but milkshake of banana and milk or mango and milk or chiku and milk or strawberry and milk definitely should be avoided. Yeah? Definitely. Didi, these days, Didi, these days, all the food that we intake is mostly acidic, and there is an emphasis on food to make the system alkaline. Can you recommend if there is some food intake that can help make system alkaline? Yeah. So all fruits on digestion are alkaline. All vegetables on digestion are alkaline. All sprouts
nuts, and seeds on digestion are alkaline. So if you can ensure that 60% of your meal or food that you eat through the day, 60 to 70% is coming from here, then you're ensuring that you're giving a chance for alkalinity to come up. Second, your pranayama. When you do your pranayams, when you're practicing your kriya, the pranayam is also making the end of our toxins are a great idea. And that's another way to make sure that we keep our body alkaline. The third thing to remember, and which will help to restore the body to where it should be, is good sleep of 8 to 9 hours. 56 hours 8 hours a day. So it's not just one thing that will contribute addressed. You can't say, I'll just eat right and that takes care of the, that you do your breathing practices, your meditation, and you need to sleep on time. Yeah, to 6 p.m. Is gone again. So essentially what she was saying is, apart from eating right, we have to take attention on our meditation and sleeping also. And we have to be back. Yes. Thank you. And so sorry about this. Doesn't happen, but I don't know, today is one of those odd days. Yes. The another thing is, many people are also going through weight gain issues. Okay, they are very thin. So what are the foods that you recommend to gain weight in a healthy way? They want to gain weight, while people who have put on weight would be actually looking forward to them and saying, oh wow, they are so nice and thin, or maybe remembering the days when they were younger and they were thinner. So just first is accept, man, it's okay if you're thin. Highlight what is good part of you. It's okay if you're thin. Don't worry too much. Just exercise. See, more than being thin or having weight gained or lost weight, what is more important is to be healthy. Can you walk up and down all the steps? Are you able to do all you have to do good Surya Namaskar and yoga? Are you full of life and energy from the time you get up to the time you go to sleep? Yeah. Do you have a good bowel movement? Do you go off to sleep the moment you hit the bed in about 5-7 minutes? Yeah, or max to max 15 minutes? Do you go off to sleep? Then this all is a sign of good health. And more than being fat or thin, this is what will matter in the long run. Yeah. Do you eat your food on time? Do you sleep on time? Do you practice your Padma Sadhana, Kriya, meditations every day and keep a healthy mind? All of this is more important than just weight gain and weight loss. The moment you address all of this, trust me, you automatically will get where you need. That you can see, the mind is not inside this. The mind is an outer layer of this. Yes. So whatever is coming from the external world is coming first into the mind. Taken care of it, it doesn't hit the body. But if the mind is not taken care, which is a layer out here, yeah, then the body gets affected. So can we start looking at this important aspect that that we've not done the course, get onto the course, learn the 5 sutras, learn the kriya and practice it. And that's when it's going to be. It's not an overnight thing. Gain, weight loss, nothing is overnight. It all happens in time. So please look at yourself. Do you really love yourself?
Yes, no? Yeah, if you love yourself, no, that means taking a lot of care of everything, physical, mental, emotional, everything. And that means doing with love, eating with love, resting with love, all of that. So take a look at it. Yeah, it takes effort because, you know, you do it for 10 days, then something goes haywire because you are traveling or some work comes up and you're not able to do it. And then the next day you're so exhausted with what happened. And so getting back to that routine takes some time. And then you say, oh, I'm not that. And you run yourself down. And then to come back again to that time, it takes all the effort to get there. Doesn't this happen whether it's weight gain or weight loss? It's simple. So that means taking care of oneself and not running oneself down, neither becoming feeling guilty or feeling, oh my God, I have no support, I have no help, so I can't do this. No, going through all of this and giving your best still, and then still accepting the body, loving the body, however it is, because this is the only beautiful medium that we have to express anything, either to enjoy or to do the practices or to do anything in our life. This is the only thing. So loving it is the most important thing of our life. Yeah, we really need to take care. This is only one body. When we realize the value of this, you know, when we turn 50 or 50 plus, till then there is no place where we have really thought, oh, जैसे चल रहा है लाइफ ना, हम चलाते हैं, देर रात तक काम करते हैं या देर रात तक हम कुछ करते बैठते हैं या नींद की तरफ ध्यान नहीं देते. लेकिन जब 50 हो जाते हैं ना और लाइफ बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, तो बोलते हैं यार ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे हैंडल करें अभी. हाँ, and then you start doubting the body. Yeah, that is not going to work. It's not going to work at all. So maybe you should form a group of friends. If you all come from one area or maybe one place, make groups of friends who believe in in the same concept and work together to it. So I have a set of friends. When we go together, we will see that, okay, we will have fruits for morning, fruits for evening as much as possible. Not that we won't eat junk, but the first thing would be eating a fruit. You know, very recently, my friend is here who's joined this session, and we had gone to a place and we made vegetable juices. And I made vegetable juice for everyone for lunch and dinner, I think, or one time, definitely I made. And from that day, everyone, after we came back from that small little trip, we all started making our vegetable juices more regularly. And then a lot of work came my way. And this entire month, my vegetable juice has not happened. So I'm telling you that life is not predictable. You have to go with what's happening and do the best in the situation. And then if you can be like that, then this is okay, then the rest will start becoming okay. So I'm giving you like the first hand experience of this. The entire 2 years of the pandemic, maybe I was like at it on everything. And now that offline work has begun, everything seems to go for a toss because you have to go for a meeting, meeting, you can't be carrying that juice, or you carry the juice sometimes, and then there's some basic thing that you can do. Continue, keep doing it. Your sadhana, eating your fruit, maybe eating one grain at a time, sleeping on time, all of that, as much as you can do. And be happy with whatever it is. Yeah, pakka. This is something really interesting that you shared. Can you also tell us whether something that must have helped you is probably writing down what you eat? Does that really work? Like we make a diary or something out of it? Or can you suggest if some practical tools like this that could be checked? Yeah. Sure. That's Jayesh, right? I'm sorry, I'm not able to see all the screens, but Yes, that yes, sound yes, voice is Jayesh. Yeah, some network So problem on this Jayesh, side. no worries. So Jayesh, what works best, and I have seen this personally, is journaling. Yeah. If at the end of the day, before we go to bed, if we can journal, whatever happened through the day, someone said something was not something to what you liked, or something made you upset, just write, tear off those papers and go to sleep. So your mind is empty. Yeah. You know, there's a connection between the brain and the hand, not when you type on the computer.
When you write, no, even if you're writing your study or whatever you learned, you write it, it goes directly here. And if you want to throw it out from here to out, also writing and tearing is the same way. If you put it on the computer or type it on your phone, it will not work. So you need a rough paper. You know those one-sided papers which are printed and just go into the kachra? Just get those, write, tear and go to sleep. It really makes life easy. Now, of course, in addition to doing your sadhana, kriya, meditation, eating right, all of that. Yeah, all of that. This is so interesting. Many of us have heard about writing, but tearing is new to everybody. Many of us. So it's very Yeah, you should interesting tear and it. yeah, makes lot of sense. नहीं तो वही लिखा हुआ जमा करके रखेंगे एक और memory of the bad times. So it's a good thing नहीं, और to वो tear. पढ़ना मत वापस. जो भी लिखा है उतर के उल्टी कर दो और फाड़ दो. पढ़ना मत वापस उसको. जरूरी नहीं है. ठीक है ना? Wow, Didi. Didi, another thing many of us want to know, what should be the ideal summer routine? We CCT, water and क्या निकला है. So many of them are not updated also, but youngsters में ये बहुत hip हो गया है. Coriander water, cumin water. So Didi, what do you recommend? How should be the day progressing? How should we eat during this season? Okay, so whatever the season, there are basically 3 cycles that the body goes through. Yeah, it goes through elimination in the morning, 4 to 12. It goes through digestion between 12 noon to 8 in the evening, and it goes through repair and rebuilding from 8 in the night to 4 in the morning. 3 cycles, and they're connected to the sun, what is called the circadian cycle. So these are not created by Vaishali or any nutritionist. They are time memorial from the sun time. Yeah. So simply, when you get up, what do? You brush your teeth, you have a bath, you go for a bowel movement, basically cleaning, right? As much as the external cleaning, there's an internal cleaning also. And so what helps the internal cleaning is fruits. You are used to a cooked breakfast of upma, poha, idli, dosa, sandwich, whatever that is, roti, sabzi. Eat. I'm not saying no. But the first thing that should hit your stomach is a fruit. So eat 3-4 fruits, not pieces, fruit. That means 1 chikku, 1 banana, 1 orange, 1 bowl of grapes. Eat this much, wait for half an hour, then do whatever it is. After that, you still feel hungry for breakfast, go eat your breakfast. Okay. Then comes your lunchtime. Now you can eat cooked meal. Actually, between 12 noon to 8 in the evening, you can digest anything that is cooked. So eat a cooked meal, just that's what's made at home, the best food on the planet, home food. And then what do? Eat 1 grain at a time. Yeah. So either eat rice or eat roti or eat bajre ki roti or makai ki roti, or whatever that is. Yeah. 1 kind of grain at one time. Eat 1 vegetable, 2 vegetables, 5 vegetables, dal, whatever is your home thing. Yeah. Make it accordingly. Okay? But make sure you eat a salad with it. Yeah, some cucumber, carrot, tomatoes, onions, spring onion, cabbage, corn. Make it tasty. How will you make it tasty? Every Indian household has at least 5 chutneys. Put 1 chutney into that thing. उसमें खट्टा, मीठा, तीखा टेस्ट सब कुछ होता है. और सब्जी को बारीक काटो. हो गया. चबा के खा लो. तो आपका सैलेड हो गया, एक अनाज हो गया, सब्जी हो गई, खाना हो गया. आपको सब रोटी नहीं पसंद है तो चावल खाओ. चावल से वजन बढ़ता नहीं है. ये गलत फहमी है ना. और क्या करोगे? चावल जब खाओगे या दाल जब खाओगे तो उसमें थोड़ा सा घी डलता है. प्लीज डालो और खाओ. वैशाली ने कहा थोड़ा सा घी. वैशाली ने नहीं कहा टेबल स्पून ऑफ घी. ठीक है. नहीं तो कल बोलेंगे भाई वो सुना हमने एक टॉक, उसमें बोला घी खा सकते. ठीक है. खाना खाते समय या ना टीवी, ना पेपर, ना फोन, कुछ भी नहीं चाहिए. सिर्फ आप और खाना चाहिए साथ. ठीक है ना. वो 20 मिनट का ही टाइम है. अगर आपका सीरियल जा रहा है जाने दो, या तो फिर सीरियल देख लो और खाना खाओ. लेकिन खाना और टीवी या फोन या पेपर साथ में नहीं जाते. वैसे ही आपका डिनर है. 8 बजे के पहले आपका डिनर खत्म करो. और अभी तो लॉकडाउन के साथ और ये सब के साथ हमें आदत हो गई है टाइम से खाना, जल्दी खाना. उस आदत को बनाए रखो. ठीक है.
सो ये 2 टाइम का खाना हुआ, और फ्रूट सुबह हुआ और शाम को हुआ। तो प्रैक्टिकली आपने 4 खाने के टाइम में से 2 टाइम पका हुआ खाना खाया, 2 टाइम नेचुरल फूड खाया। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू मेक द बॉडी मोर alkaline. Yeah, so Jayesh asked this question, what else would help? This is also what will help to make sure that you eat 2 meals which are cooked and 2 meals which are raw, that means fruits. और शाम के समय जब आप फ्रूट खा रहे हैं 4 बजे, तो आप फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, उसके अंदर की पतली मलाई खा सकते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ता, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वो बुरा नहीं है हमारे लिए। शुगर केन जूस पी सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं विदाउट शुगर। गन्ने का जूस पीने में कोई हिचकिचाहट मत करना, आराम से पियो, है ना। आपको बहुत डर लगता है तो आजकल तो वो लोग भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, पेपर ग्लास देंगे आपको, पेपर स्ट्रॉ देंगे आपको, लो उसमें से पियो। या फिर आपका एक स्टील का फ्लास्क कैरी करो या स्टील का ग्लास कैरी करो जो कैप के साथ आता है, उसमें ट्रांसफर कर लो और पियो। शुगर केन जूस निकाल के रख नहीं सकते हैं, निकाल के रखेंगे तो काला हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्टेल जूस है। फ्रेश जूस का कलर देखा हुआ है तो बच गए आप, है ना। तो स्मार्ट थिंग है, बाकी जूस का पता नहीं, ऑफ कोर्स टेस्ट डाउन हो जाएगा अगर निकाल के रखा है तो फ्रेश है। नहीं तो कोई भी फ्रेश फ्रूट जूस, नारियल पानी, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप। क्या है ड्राई फ्रूट्स? आपका खजूर, अंजीर, किशमिश, मुनक्का, जर्दालू, ये सब भी खा सकते हैं, इससे भी वजन नहीं बढ़ता है। आप कितना खाओगे? 1 मुट्ठी जितना। 1 मुट्ठी आपने अगर खजूर खा लिया ना, तो अगले 2.5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। फिर वो डिनर टाइम आ जाएगा, फिर आपको डिनर खाना है, खाओ। आप 2 बिस्किट खाते हो तो पेट भरता नहीं है, फिर 1 वाटी चिवड़ा भी चाहिए, 2 वाटी बिस्किट चाहिए और कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट भरा नहीं। और फिर हम बोलते अब मैं डिनर नहीं खाऊंगा। क्यों? सब कचरा तो खाया। अगर आपको खाना है ना ये सब तो खाओ, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन ये खाने के साथ खाओ ताकि वो आपको नुकसान नहीं करे। आपका टेस्ट भी चल जाएगा, काम भी चल जाएगा। इज इट ओके? मुश्किल है ये? नहीं ना? ओके, कुट्टी आंटी कह रही मुश्किल नहीं है, सिर हिल गया। कूल। दीदी आजकल तो ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आधा किलो मक्खन जाता है, आधा पैकेट चीज जाता है एक डोसे में। सो दीदी, व्हाट इज योर टेक ऑन चीज? It is such a common thing. People give children in the tiffin one cube of cheese. So what is it? Is it healthy, the cheese, or what is it? It's a packed food, right? Simple. Anything that is packed in, canned, processed and bottled, which has a date, is not healthy. You don't eat cheese for health, you eat cheese for taste. So if you're going to go to a wedding or to a party and you know that, oh, the world's makhan and cheese is going to fall into it today, then through the day make your food, make your lunch lighter, make it more simpler. Yeah, eat a salad from home and go, and then eat that. And next morning, don't forget to get up. Of course, doing Surya Namaskar or any Padmasadhana will be a challenging thing with cheese in the stomach. It will not let you bend forward very well. Yeah, but don't not do your exercise. Still do it. However, whatever you manage, so that at least the cheese can move inside. See, we don't have a weather to digest cheese. If you are in Italy, first and foremost, सब रास्ते ऊपर नीचे है, चल चल के नीचे जाओ, चल चल के ऊपर आओ, सब जगह गाड़ी नहीं जाती है। वेदर अलग है, ये ट्रॉपिकल है, इंडिया ट्रॉपिकल वेदर में आता है। इसमें इतना गर्माहट है कि वो पचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। या तो फिर आपको पंजाब में होना पड़ेगा, जहाँ पे फिजिकल लेबरस टास्क ज्यादा होता है। हम सब एक जमाने में करते थे, पानी खींचना, खेतों में काम करना। अब तो सिर्फ ये एक बटन, ये एक उंगली काम करती है, हर कुछ उंगली से होता है या फिर ताली से होता है ना, लाइट लग जाती है, ये हो जाता है। तो आप तो उतने भी कष्ट नहीं कर रहे हैं और फिर वेट गेन की बातें कर रहे हैं, कैसे चलेगा? हाँ, आपको फिर यूज बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे घर में मैं नल खोलूंगी, या मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊंगी, या झाड़ू पोता खुद करूंगी, है ना। ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए हमारी दादी और नानी को जिम नहीं जाना पड़ा, वो तो रोज की एक्टिविटी में ही उनका वेट कंट्रोल में रहा, है ना। और उनका तबीयत 90 और 90 प्लस में भी मस्त रहा। हम हाफ एज में हैं और हमें बैक प्रॉब्लम हो रही, राइट?
उन्होंने शायद 10 और 12 बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि हमारे पहले के फैमिलीज इतने बड़े बड़े होते थे। अभी 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, खत्म, राइट। सो कहाँ से क्या गड़बड़ाया? भगवान की मिट्टी गड़बड़ाई क्या? नहीं, भगवान ने मिट्टी तो चेंज नहीं की, हमने खाना पीने और जीने के तरीके बदल दिए, है ना। तो वो भी चेक करना पड़ेगा अगर हमको सेहतमंद होना है तो, है ना। तो ये सब बातें आएंगी इसमें। A couple of final questions, I think 2 or 3 more. I heard a very interesting take from you about eating your liquid, making your food. You know what it is. You want to tell them that is life changing for. राइट। सो मैंने जब कहा आपको खाने के लिए, तो आज और एक चीज ऐड होगी उसमें, वो है कि आज से जो भी लिक्विड चीजें हैं ना, उनको चबाना है, और जो सॉलिड चीजें हैं उनका पानी करना है। जैसे सीमा पानी पी रहे वैसे पानी नहीं पीना। हाँ, सॉरी सीमा, आई एम यूजिंग यू एज एन एग्जाम्पल, बट इट इज सो naturally right there and we can correct that. So पानी को चबाना है, मतलब इतने स्लोली लेना है। और सॉलिड फूड को कितनी बार चबाते हैं हम? गिन के बताओ। डोंट टेल मी 32 टाइम्स, दैट इज द आइडियल थिंग। हम चबाते हैं 3 बार, 32 का 2 निकल गया, सिर्फ 3 रह गया। ओके, सो उतना चबाना है कि उसका पानी हो जाए, और लिक्विड को इतना चू करना है कि सबने हैप्पीनेस कोर्स किया है? यस, ग्रेप प्रोसेस याद है? बस वैसे खाना है, फिर 100% वैसे खाओगे ना तो वजन अपने आप कम हो जाए, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उतना खाना जितना खा रहे उतना भी नहीं लगेगा, शायद उससे बहुत कम खाना लगेगा, ठीक है ना। Yes. There is another interesting combination that I heard from you also, and very often we say it art of living courses, but very difficult for people to, I think, relate and understand. कि food और पानी को एक साथ नहीं करना चाहिए. Can you elaborate, दीदी, why? Like खाना खाते खाते पानी पीते हैं लोग बहुत ज्यादा. So what are the repercussions of that, दीदी? What happens when we do that? Okay, so हमारा छोटा सा पेट है जो इतना मुट्ठी जितना ही है हमारे, और जब खाना उसमें जाता है ना तो उसके ऊपर एसिड गिरता है, बाकी विटामिन गिरते हैं, जो भी डाइजेशन मटेरियल है वो गिरता है। जब हम पानी पिएंगे खाने के बाद तुरंत, तो वो डाइल्यूट हो जाता है एसिड। अब कुछ डाइल्यूट हो गया तो वो काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो फिर उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगेगी। कौन देगा ये क्वांटिटी? बॉडी को देना पड़ेगा। जो 120 साल के लिए रखा था वो आप 50-40 इयर्स में यूज कर डालोगे, और फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आपके रिजर्व्स वापस ठीक करोगे, तो फिर आपको लॉस में चलते रहेंगे ना। फिर सपोर्ट कहाँ से आएगा? फिर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि हम पानी खाने के 1-8 घंटे बाद पिए या 1-8 घंटे पहले पिए, क्योंकि पानी पी लिया आपने खाने से पहले तो पेट पानी से भरा हुआ रहेगा, तो आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, जितना जाना चाहिए वो नहीं करोगे, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और पानी लगा ही तो खाने के साथ सिप सिप, क्यों? जैसे आपका ग्राइंडर का ब्लेड है, उसको मूव करने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, राइट। तो सिप सिप करके लगे उतना पानी ठीक है, ग्लास के ग्लास नहीं। What are the foods that can help to improve the gut health? All fruits, vegetables, sprouts, nuts and seeds. Everything that is not tinned, canned, packed, processed is what will help to improve gut health. Also, the gut and the mind are connected. There is a very beautiful vagus nerve that connects the mind and the gut and almost every organ, and it gets stimulated only through kriya and meditation. So if you take care of that, then you take care of your gut also. So we are blessed. It's just now that I have to realize I'm blessed and I have to practice it. I have to give that much time. In 124 hours, we are saying give 24 minutes to yourself by doing the kriya and see the change. Automatically sleep will become better, eating will become better, weight loss will happen, you will want to exercise, everything will happen. Yeah, it's not an overnight journey. It takes time.
Yes, Didi, and now talented. that you're talking about Kriya, we want to invite everybody. Tomorrow onwards, we are having a course, online meditation and breath, and we'll be joined by Kashi Bhaiya on Saturday and Sunday. So those who Wow. want to repeat, you're welcome. जिन्होंने नहीं किया, you also can join us. I put the details on the chat box of phone numbers. Didi, coming to final question, junk food is unavoidable. So what do we do to make sure, apart from exercising, of course, कि इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा ना हो, गिल्टी ना लगे बहुत खाने के बाद? देखो, जब मूवी देखने जाते हो ना तो सोच के गए हो कि भाई आज तो समोसा खाने वाले, राइट? समोसा खाओ, एंजॉय करो और उसके बाद गिल्टी मत फील करो, क्योंकि फिर वो समोसा सड़ जाएगा। ठीक है, अगले दिन फिर से बैंक बैलेंस को ठीक करो, फ्रूट एक्स्ट्रा खा लेना, 4 की जगह 5 खा लेना, दूसरे दिन रोटी एक कम खा लेना लेकिन सैलेड ज्यादा खा लेना, एक्सरसाइज करना मत भूलना, और समोसा जो एंजॉय किया था उसकी खुशी को याद कर लेना। फिनिश्ड, डन। वो खा के फिर गिल्टी करने का मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। एंजॉय करो भाई, वो क्या गुरु कृपा का समोसा था या A1 समोसा था, एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, 100% खाना। भले पिक्चर देख रहे हो, छोटा छोटा बाइट लेके चबा चबा के, आंखों को बीच में बंद करके, वो हीरो हीरोइन नहीं देखा, एक माइंड तो पॉइंट चलेगा अपने साथ और अपने समोसे के साथ रहेगा। ठीक है, थोड़े मिनटों के तो सुनाई देगा ना एक्टर एक्ट्रेस क्या कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या कहने वाले हैं। वो स्टोरी तो आपने और मैंने ही लिखी थी, वैसे कौन सी तीर मारने वाले हैं अलग की? हंसाते हैं क्या वो लोग? नहीं, थोड़ा बहुत रुला देते हैं बस, आगे कुछ नहीं करते। तो मिस नहीं करोगे तो एंजॉय द समोसा एंड डोंट फील गिल्टी अबाउट इट एट ऑल। ठीक है Maybe I thought this would be last, but 2 more questions are there. Many people Sure. are asking something about milk, Didi. Many people are asking milk digest नहीं होता, कैसा milk पीना चाहिए, milk में क्या सावधानी रखनी चाहिए? Please, can you tell us a little bit about milk? Okay, so first and foremost, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता तो मत पियो, सिंपल है। इतना कष्ट क्यों करना है? हाँ, आपको क्यों पीना था मिल्क? क्योंकि आपको कैल्शियम चाहिए। क्यों? क्योंकि हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन हड्डियों के लिए कैल्शियम के साथ फास्फोरस जरूरी है, उसके साथ विटामिन डी चाहिए, इतना सारा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज नहीं किया तो विटामिन डी खाओगे लेकिन वो अब्सॉर्ब कहाँ से होगा? तो उसका बेस्ट फॉर्मूला है केला। अब दिन के 2 केले खा लो, आपको कैल्शियम मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा। सुबह 10-15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम धूप में टहल लेना, विटामिन डी मिल जाएगी। और एटलीस्ट 6 सेट्स या एटलीस्ट 3 सेट सूर्य नमस्कार डाल लेना, फिर आपका बोन के अंदर कैल्शियम गया। तब तक वो जाने को नहीं है, कुछ भी कर लो नहीं जाएगा। जब तक स्टिमुलेट नहीं होगा बोन, तब तक आपका कैल्शियम अंदर नहीं गया। सो दूध के पीछे मत पड़ो। अगर आपको दूध, और अच्छा आप उनमें से हो कि दूध अच्छा लगता है, दूध डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है पियो। आपको कितना दूध चाहिए? आधा कप। कप पता है कितना है? मग इतना बड़ा होता है, कप इतना छोटा होता है। उतना 1 कप दूध काफी है। टेस्ट के लिए ले रहे हो, आपको लगेगा हाँ इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, बिल्कुल मंजूर है, वो ले लेना 1 कप। मे बी शाम को जब आपके फ्रूट्स खा लिए, आधा घंटा उसके बाद निकल गया, आपका दूध पी लो, या फिर सोते समय आधा कप वो पी लो और खुश हो जाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करना मत भूलना। और दूध में से कैल्शियम अब्सॉर्प्शन होता नहीं है, हाँ? ये भी याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, मैं बता रही हूँ कि ये अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो मन की शांति के लिए पी लेना, खुश हो जाना, और एक्सरसाइज फिर भी करना। 2 केले सुबह खा लेना, काम हो जाएगा फिर। ठीक है, डन। सो दूध पीने का, नहीं पीने का, हाँ ऑफ कोर्स अगर पीना है और है तो देसी गाय के दूध को ही पीना, क्योंकि वो दूध हमारे लिए, उसे A2 मिल्क कहते हैं, और वो हमारे लिए। सो बेस्ट है कि वो करो। ठीक है। Yes, Didi, final question. Many ladies are asking कि state of mind, of course, we have all noticed has impact on food. हम लोग खुशी से बनाते हैं या गुस्से से बनाते हैं, तो उसका food पे definitely impact होता है। तो क्या करें दीदी? How do we maintain? What is the best practice to do when we are cooking or when we are eating? Eating के वक्त तो आपने बोल दिया टीवी वीवी नहीं देखना है, फोन नहीं देखना है, तो खाना बनाते वक्त दीदी what do you recommend? What is your favorite Hindi songs? Play those.
the mind mood will change. Automatically food will be nice. A Hindi song, if you're a South Indian, then the South Indian favorite songs, the fun songs. I can say satsang songs also, but not necessary and must. It can be anything that you like. Yeah, maybe everyone has gone out of the house and you actually like jazz music. Play the jazz music and cook and be happy. Then the food will come out all the way. Anyway, आप खाना अपने प्यार लोग प्रिय लोगों के लिए बना रहे हो ना, तो फिर क्या, थोड़ी देर गुस्सा होगा, बाद में ठीक हो जाएगा. ठीक है. Yeah, this was very nice, दीदी. गाना सुनते सुनते खाना बनाना. अभी ये भाग दौड़ में बात करते करते फोन पे खाने बनते हैं. So this is a good reminder कि फोन साइड पे रख के एक्चुअली से म्यूजिक लगा के हम कर सकते हैं. So yes, it was overall, दीदी. All questions are done. We are so grateful to you. Many more are there, but I think for that they'll have to attend the holistic cooking course. Yeah, sure. So, Didi, can you tell them briefly what is the holistic cooking course? Like, if they want to do it, what are the things that we teach them? Okay. So the course is basically teaching you a method of cooking which helps you retain all the nutrients. It tells you what to eat, when to eat, how to eat. It talks about prakriti, how to identify. Not that the doctor is, of course, the best person to identify your prakriti, but just an overall assessment of your prakriti. और जब वो बिगड़ती है प्रकृति तो क्या होने लगता है, उसका एक अंदाज है ना. और लेडीज और जेंट्स भी आएंगे कोर्स में, तो इट इज लाइक घर पे आना, मैके पे आना. कैसे होता है ना, मैके आते हैं तो फिर बैठे बिठाए खाने को मिलता है. वैसे कुकिंग कोर्स में टीचर खाना बनाती है और आपको खिलाती है, टेस्ट करवाती है बहुत सारी डिशेस एक दिन में, तो मजा आता है ना. ज्योति को वो मजा आया था खाने में, सबको मजा आता है उसमें. और पेट भरता है, पता है, इतना छोटा छोटा खाते फिर भी पेट भरता है. क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स्ड है, पूरा एंजॉय कर रहे हैं. और इट्स अ मिक्सचर ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल्स टुगेदर. एंड देन द लास्ट डे there's some secret that happens, so come join the course. I think मुलुंड में ही एक टीचर है, मुझे नाम नहीं याद है उसका अभी, रुचि या कुछ तो है. Isn't it online course? Yes, it is an online course. I don't take an online course, but there's a teacher called Kaushani Desai who does take that online. I've seen her take a lot of I mean, we became teachers just one after the other, and she manages to take a lot more. So yes, please, you can do online, and now things are getting offline. She keeps coming to Bombay. Where do I take course? I don't at the moment with my current profile where I handle corporate programs for Maharashtra and Goa. I don't manage to take a cooking course. Till I was in STC, I still managed with all my work, but now it's absolutely difficult. So I come on these talks like these and talk to people, charge them up, and maybe get them to do the course. That is so sweet of you, Didi. So I know you are very busy handling all this, and still you are inspiring us to eat healthy, eat with fun, cook with joy, and not feel guilty about it. Be happy as we are. So much takeaway from this session. Thank you so much, Didi. Thank you everybody for participating, attending. Yeah, Wednesday evening we learned how to set our summer right. no parezi of mango and sugarcane and things like that anymore. Thank you, Didi. Okay. And we look forward to hearing more from you someday soon. Sure. Yeah, thank you everybody. Take care. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Good night. Stay safe. So those of you who are there in our group, we will share the details of the holistic cooking course that is happening online. Okay, so आप लोगों को करना है तो आप उसमें जाके कर सकते हैं. And we'll update you about Vaishali Didi's various talks, including this one, so you can get more enlightened about right way of eating. Yes, thank you again, Didi. Thank you, everybody. Bye.